Namaskar. Good morning. This is the third and the last day of Unmesh Festival of Expressions. ललित कला गैलरी में आज के पहले सत्र में आप सभी का स्वागत है। इस सत्र का शीर्षक है What Freedom Means to Me। मेरे लिए स्वतंत्रता के मायने। Every being aspires to be free of bondage, and to be free is part of nature. हालांकि दुनिया भर में हर समुदाय और हर समाज के लिए स्वतंत्रता आजादी के मायने अलग-अलग हैं। Over the period of 1,000 years and more, freedom is perceived as part of fundamental right, and literary creators have always stood by the concept of freedom, freedom to express oneself. This session features presentations by distinguished scholars from various walks of life and representing multiple languages. The duration of this session is actually 2 hours, but we are starting a little late, and we will put the blame on bad weather and traffic jam. And since it's the last day, I hope you all bear with us. We'll try and conclude the session by 12 p.m. The session will be chaired by Shri Chaman Lal Gupta ji. I would like to introduce Chaman Lal Gupta ji. आप एक प्रख्यात हिंदी लेखक, अनुवादक और आलोचक हैं। आप हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से अध्यक्ष के पद से सेवानिवृत्त हैं। आपकी 12 कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। आपकी अनुवादित रचनाओं में परम पावन दलाई लामा की 2 पुस्तकों का अनुवाद भी शामिल है। आप विश्व हिंदी सम्मान, साहित्य भूषण और अन्य कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आदरणीय चमन लाल गुप्ता जी, आपसे स्नेह सहित आग्रह है कि कृपया मंच पर पधारें। Extremely sorry about this. Kindly join me in welcoming the chair of this session. परिचय कराना चाहूंगी अन्य प्रतिभागीगण से, जो कि आज इस चर्चा में भाग लेंगे और अपने शरण कुमार लिंबाले जी को। आप मराठी के लेखक, कवि और साहित्यिक समालोचक हैं। आपने 40 से भी अधिक पुस्तकें लिखी हैं, लेकिन आपको अपनी आत्मकथा अक्कर माशी के लिए जाना जाता है, जिसका अनुवाद अनेक भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में हुआ है। आपकी आलोचनात्मक कृति दलित साहित्य की नैतिकता की ओर, दलित साहित्य पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है। अपने उपन्यास सनातन के लिए आपने वर्ष 2020 में सरस्वती सम्मान प्राप्त किया। आपकी 70 पुस्तकें अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, गुजराती, उड़िया और बांग्ला भाषाओं में अनुवादित और प्रकाशित है। We are very happy, sir, that you are with us on the stage today. Now I would like to invite
Now I would like to invite Shri R.N. Jyoti Cruz. He is a Sahitya Akademi Award-winning Tamil novelist. He has to his credit 4 novels and a collection of essays. He regularly contributes articles both in Tamil and English. Apart from the prestigious Sahitya Akademi Award, he has won a dozen awards and had been shortlisted for the Crossword Prize. R. Jyoti Cruz was a member, National Shipping Board and National Welfare Board of Seafarers. A warm welcome, sir. Now I would like to invite Shri Sangana Bhatta Rasayaji. He is a renowned critic, poet, historian, prosodian, grammarian, and theatre artist in contemporary period of Telangana region. He authored, edited, published more than 20 books, including biographies, dramas, translations, history of Telangana, commentaries to ancient Telugu classics. He is currently serving as visiting professor in PS Telugu University, Hyderabad. He has bagged many awards. He also penned more than 400 essays in various magazines and gave at least 400 speeches on national, international, and regional platforms. A very warm welcome, sir. We have 2 more speakers on this panel today. I'm just wondering if we have Damodar Masu with us. Okay, that is with us. Yeah. मैं इनवाइट करना चाहूंगी श्री दामोदर मासू जी को. He is a distinguished Konkani fiction writer, critic, and script writer in Konkani. He has authored 16 books, of which 3 are novels and 5 are short story collections. His book of stories, Teresa's Man, was nominated for the Frank O'Connor International Award in the year 2015. He has written screenplays and dialogues for Konkani films which bagged awards, and some of his stories have also been adapted for the national television. He has been honored with many awards and honors and has recently been chosen for Bharatiya Jnanapith Award. आपका हृदय से स्वागत है सर. मोहन गेहानी जी हमारे बीच हैं. अरे वाह, हम तो इंतजार कर रहे थे. आपका हृदय से स्वागत है. मंच पर आइएगा सर. आप एक प्रसिद्ध सिंधी विद्वान, नाटककार, अनुवादक और कवि हैं. आपकी अनेक कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं. आप साहित्य अकादमी पुरस्कार और लंदन स्थित विश्व सिंधी कांग्रेस द्वारा सईद जीएम सैयद स्मारक पुरस्कार से सम्मानित हैं. सिंधी साहित्य में आपका योगदान अभूतपूर्व है. कपिलावात सायन की पुस्तक भारत नाट्य शास्त्र के आपके अनुवाद के लिए आप साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार और मध्य प्रदेश गौरव पुरस्कार से सम्मानित हैं. Sir, may I please request you to take the stage and please join me in welcoming all the speakers on the stage. अब हम अभिनंदन करना चाहेंगे अपने सभी प्रतिभागियों और अध्यक्ष महोदय का. हमारे बीच साहित्य अकादमी से अगर कोई प्रतिनिधित्व है तो हम उनके हाथ अलंकरण कराना चाहेंगे. तो ऐसा करते हैं. सबसे पहले मैं मोहन गेहानी जी से आग्रह करूंगी कि वो हमारे आज के अध्यक्ष महोदय चंद्रलाल गुप्त जी का अभिनंदन करें. उसके लिए कागज साइन करना होगा. और अब मैं आग्रह करूंगी हमारे अध्यक्ष महोदय से कि वो हमारे बाकी सभी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स का अलंकरण करें, अभिनंदन करें. सबसे पहले मोहन गेहानी जी का अभिनंदन आप करिएगा.
शरण कुमार लिम्बाले जी, संगना भट्टा नरसैया जी, R.N. Jyoti Cruz sir, Yeah. और श्री दामोदर मास्टर सर का। So from here on, I would request our honorable chair to kindly take this session forward. We have two cordless mics here. If you want to speak from here, that is also possible. Otherwise, this podium is here. Over to you, sir. साहित्य अकादमी के इस ज्ञान यज्ञ में यहाँ मंच पर विराजमान साहित्यकार बंधुओं और सभागार में उपस्थित साहित्य प्रेमी साथियों, ये हमारे लिए निश्चय ही बड़े गर्व, गौरव और आनंद का विषय है। इतने बड़े बड़े साहित्यकार जो कि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित साहित्यकार हैं, वे शिमला में पधारे हैं। मैं शिमला का नागरिक होने के नाते और शिमला में ही पढ़ा लिखा हूँ, यहीं पर पढ़ाया है, यहीं पर काम किया है। इस नाते से शिमला की ओर से और साहित्य अकादमी की ओर से आपका स्वागत है। अपना विषय जैसा कि बताया गया बड़ा स्पष्ट है कि मेरे लिए आजादी का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस टू मी। ये जो विषय है बहुत गंभीर है, इसलिए कि हर व्यक्ति के लिए आजादी का अर्थ अलग अलग तरह का होता है। मैंने अपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज में, जहां मैं डायरेक्टर भी रहा, वाइस चेयरपर्सन भी रहा, वहां पर एक वर्कशॉप कराई थी चित्रकारों की, और चित्रकारों को यह विषय दिया था कि चित्र बनाइए इसी थीम के ऊपर। और उन्होंने चित्रों में आजादी उनके लिए क्या अर्थ रखती है, ऐसे 15 चित्र बनाए थे, और वो चित्र आज भी इंस्टीट्यूट की गैलरीज में लगे हुए हैं। तो एक चित्रकार अपने भावों को कैसे व्यक्त करता है वो वहां पे देखने को मिला था। अब शब्द शिल्पी कैसे अपने विचारों को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, ये आज हमें सुनने और समझने को मिलेगा। इसी छोटी सी भूमिका के साथ मैं आज के पहले सबसे सीनियर साहित्यकार, हालांकि होना तो उल्टा चाहिए, सबसे जूनियर से सीनियर की ओर, लेकिन मंच की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि हमारे बीच सबसे सीनियर उम्र के लिहाज से भी और अन्य अनेक प्रकार से बीच में उपस्थित हैं श्री मोहन बिहानी जी। आप सिंधी में, अंग्रेजी में, दोनों में लिखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार नाटकों पर मिल चुका है। अनुवाद में भरतनाट्य शास्त्र के ऊपर सिंधी में काम किया है, उस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इतिहास, काव्य, अंग्रेजी और आलोचना, तीनों में इनका बहुत योगदान है। मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय बिहानी जी।
Mr. President, distinguished persons on the dais, and my dear, very own friends and writers in the audience. I would like to share a secret with you before I start. I feel that I have become younger by 3 years in these 3 days. I'm 85 years old and I feel I'm younger by 3 years. At my age, you've discarded many myths and shaped many illusions and misconceptions and try to read the true meaning of the words. The dictionary gives you the other words of the same word, but the meaning of the words you have to find in life itself. And I have to say that I have was some communication where it was told that I have to restrict myself to 10 minutes. And therefore I written something. Because extempore, you can go on and on and on. And when you write, you can restrict yourself. I have taken this concept of freedom at a conceptual level, not at any political, economic, social level, or any other facet of life. I take it only at conceptual level. Therefore, one caution I want to sound that those below 60 have to take my presentation with a pinch of salt. And I don't have a salt myself. Salt you have to provide yourself as much as you can take. Thank you, and I'll start by this. Freedom is a multi-dimensional and multi-layered concept. It is not a linear concept. It is rather like a tangled web. I will try to unscramble the scrambled egg or try to unpeel the peeled onion. Concept of freedom is very constricted. I have no freedom to birth, and even the freedom does not depend on my will. I have no freedom to choose the country and time of my birth and the family I am born in. So the freedom has to be understood with all these limitations. I shall only briefly touch the high counters of changes in respect of historical movement. Biologically, humans assume the present form about 90,000 years ago, so say 100,000, about 90,000 years ago. For more than nearly 80,000 years, the man had to lead the life of a hunter and fruit gatherer. It is only in the last 100 years the man has found the way to cultivation of the food. For nearly more than 70 to 80,000 years, the man was hunted by insecurity. In order to address this insecurity of more than 80,000 years, and only about 10,000 years ago, he moved towards civilization, and that led to societal prison. To use the cliche, he was born free and now he finds himself in chains. Or these chains self-forged. In the process of what is called the social contract theory, man had to surrender a large part of freedom to address his insecurity.
and opt for security. It is this quest of security he has to pass from many stages of social evolution, from being a group, a tribe, and a community. Traditions and customs that bound him continue to change with time, but could not free himself from the collective working and social religious ethos of his times. Although in time he continued to gather some speed and greater connectivity and mobility. All the same, he continued to be rooted to the soil, trapped in what may be described broadly as feudal relationships. The concept of freedom is irrevocably connected with the concept of discipline. Outwardly, the discipline manifests in two ways. One is discipline of military, that is imposed by coercion, and other is discipline attained by a yogi. Imposed discipline has a knack of breaking straitjacket, but the discipline of yogi is self-evolved with rigorous training of mind and body. Is it possible that in any future time, the mankind may evolve to collectively to stage to invest the conquest of freedom with any concrete meaning? Such a possibility appears to be in a very distant future. Industrial revolution trapped him into nation states, surplus economy, colonialism, freedom movements, proletariat revolution, and alternate economic structure. But power has its own rules. It's race on the pyramid that has a vast base and a sharp pinnacle. Power flows from base to top. It is concentrated at the top and again flows down and trickles, retaining the vast reservoir at the top. Political power, economic power, and muscle power are interchangeable. The steam engine to aviation gave him a greater mobility, and this way the time and distance were greatly condensed. This gave rise to concept of individual freedom, but in fact, the man remained buffeted between the state apparatus and market economy. The state apparatus evidently a coercive instrument, and a market economy may claim to be free agent, but in fact, both feed on each other. I said the money power and political power are interchangeable. The free market resorts to hidden persuaders that in fact are coercive marketing strategy, thus the freedom remains elusive. In spite of that, all these limitations, now in the space age, the man is confronted with many challenges, as if he is catapulted into space, feels himself uprooted from the soil, and his feet do not firmly hold to the earth. That has been the case since thousands of the years. He suffers from the keen sense of insecurity. As a result of knee-jerk reaction, he finds solace in the past and wants to strongly hold fast to his past. We find him at present in a regressive form at a political and emotional level. At the same time, he is confronted with many challenges in ever-progressing scientific sphere. Does he have a freedom in those domains as ever
The main challenge still remains as to how to invest the vast number of humans with human dignity, as they are still leading subhuman existence. In my opinion, the greatest challenge to the mankind today is to invest half of humanity, which is leading subhuman existence with the dignity, human dignity. They do not even possess human dignity. The challenge, again, the challenge is to clean air and water. The ecological damage that industrial age has wrought is incalculable. The internet, the satellite communications have made the distance and national boundaries redundant. Nationalism has now remained only a hangover of the past. The genetic engineering may prove to be a boon or a pain. The artificial intelligence could be a tool of service or a domination. The choice is vital. Here I will discuss the philosophical aspects of determinism or of free will and the concept of radical humanism. Because those are very vast subjects, and here it's not possible to delve into those subjects. Do I as an individual have the freedom to act? As an individual, for me, the concept of a freedom is circumscribed by these factors. The concept of absolute freedom of an individual freedom is as elusive as concept of nirvana, moksha, or salvation. The concept is bewitching as colorful horizon. You may try to read there and another horizon opens up. Even time is not free. Stephen Hawkins, The Brief History of Time, speaks about multiple timelines. Yet, let me concede that the boundless powers of a life force and the creation is free. That is what the freedom means to me. Thank you for listening to me, Prashant. अभी आपने आदरणीय मोहन तिहानी जी को सुना। आजादी एक रेखीय नहीं है, मल्टी लेयर्ड है, और कितनी लेयर्स उसकी हो सकती है, उन सब की चर्चा आपने हम सबके बीच में की। बहुत आभार। अभी मैं अपने इस सत्र के दूसरे वक्ता आदरणीय जे डब्ल्यू जी को आमंत्रित करता हूं कि आजादी उनके लिए क्या है, इस पर अपनी बात हमारे सामने रखें। थैंक यू। Chairman of the session and my fellow participants, brothers and sisters, and youth of this study. Good morning, all. I first of all want to thank Sahitya Academy for giving me a chance or an opportunity to stand in front of you. I definitely feel that this is an opportunity given to me. I do not stand here as Joe DeCruz or N. Joe DeCruz, but I stand here as a soul of coastal India. You must be knowing coastal, where the land meets the ocean waves meet the land, and I live there. And I'm from there, and I represent that people, that is the coastal communities of India. My dear brothers and sisters, I have come to Shimla for the first time.
And as the moderator mentioned, the meeting was little, delayed due to traffic jam. The moment I landed in Shimla, I was watching the traffic here. I don't say there's a traffic jam, but I'm really mindful. I don't want to say worried. I'm really mindful how these people of the Hindi region are surviving, living. What is their economy? How are they making their livelihood? How is the climate here? And how they survive here? All that is repeatedly coming to my mind, my dear brothers and sisters. The reason is, I am from a place called seashore, where the life's undercurrent, the basic of the life, remains to be unsettled. Life is not settled. Every day is passed with uncertain moments. So when I come from there, I also wonder and see the different landscapes. And Shimla is definitely a different landscape. And I fondly want to embrace, my dear brothers and sisters, that this is the place I have come in, the blessed region. And you are all making a living. And you contribute to the nation. And you contribute to the families. And you contribute to the society. And you contribute in the literature. And that is the reason we are here. Right? You contribute for the younger generation. You contribute for the future. And I salute you. And with that, I want to, say what I feel, what freedom means to me as a representative and as a soul of coastal India. In Tamil literature, there are 5 landscapes, 5 civilizations are recorded. One is Kurunji, the hill or a mountain, and the life based on the mountain. Like maybe Shimla will come into that category. And the other one is Mullai. Mullai is nothing but the forest and the life based on the forest region. The other one is called Marudam. Marudam is an agricultural area where there used to be a lot of paddy fields and the life based on the agriculture. The other one is called Neither. That is from where I come from. That is the coastal area, sea and the side of the sea. And there is one more that's called Pale, and Pale is a desert area. And how the life based on the desert area, how these people are making their living, that's what. These are all different civilizations recorded from sung literature. And that is from the different landscapes, how the life is performing and life is going on. I want to tell you a fact. There is an understanding about different landscapes. We from the coastal India, we from the seashore, see the upland people and have an opinion about you. And from the upland people, looking down to the coastal area and having their opinion. And in general, the coastal area and the living there is always notified, oh, these people are living in the sea borders, coastal borders, and they are mere fishermen. This is what the general understanding. And I want to make you understand, it is not only fishing here, my dear gentlemen. And it is these are the communities. India, Bharat was regarded as a maritime supreme power once upon a time in the 12th century and prior to that, 13th century, prior to that also. And at the time of the king, the very famous king, Rajendra Chola, we conquered Kadaram
At that time, Bharat, the nation, was regarded as the maritime supreme power. And the maritime supremacy is not without the people of the coastal region, my friends. So you are regarding these people as mere fishermen. It's not at all there. This is one of the way to make their living there. That's all. There are boat builders, there are chunk divers, there are pearl fishers, there are sailors, and there are businessmen who are making their living by doing business, maritime, export, import business, who are in the coastal communities, my friend. So the opinion of fishermen is a reduced look. It is not the correct look. It is not the truth. So you have a vibrant, very vibrant economy on the coast, and that needs to be recognized by the brothers and sisters. Not only that, and I have to tell you the truth. Please understand, the coastal communities, I want to repeat and repeat, the coastal communities are the first line of defense of this nation. Do you understand? The coastal communities not working, not taking any salary, but by their mere life, they are there as the first line of defense to the nation. It is because of their defense mechanism, we are all very safe in the upland, my dear gentlemen. This is a message I want to tell you. And on this basis, I want to understand what freedom means to me. Do you really understand that what type of a living is there in the coastal area? And the soul of the coastal region, and the representative of coastal region, and the beloved son of the sea goddess. What is the meaning? What freedom means to me? I have to share it with you. One more thing I want to tell you, my dear brothers and sisters. 2004 is an unforgettable year in my life. Not just because of my first novel called Auditorium got published, but because of the entire coastline was devastated by the tsunami. Do you know what happened with the tsunami? In 2004, I was also watching in the television. I am very grateful. As a soul of coastal India, there are contributions for flooding from different corners of the nation and from the global level. But shocking to me, I was listening to the interviews of the TV programs where people are not aware of the coastal region. What? Coastal region, tsunami, and these people are affected. This is what they were explanatory since. And people are making such comments. This is a democracy, my dear brothers and sisters. In this democracy, and the coastal people, coastal communities are also the equal citizens of India. We vote our people, our representatives to come to the legislative assembly and to the parliament. And in this democracy, and the people who are all there in the upland, they do not know the existence of the coastal communities. And this tsunami has to introduce coastal communities to this upland area. This is a pathetic situation. It is a failure of democracy. Do you understand? This is a failure of democracy, what we regard as democracy. My coming to literature is a mere accident. Ladies and gentlemen, after my post-graduation in MPhil, I was about to go to my commercial area. But suddenly, I was telling you, the soul of coastal India that was operating in me. And I was approaching different writers. I was talking and meeting them and, requesting them, why don't you write about the coast? And I just met Mr. Damodar Mazumdar. Very frank question I asked him, do you know any coastal writers?
He said, I am a coastal writer. So this is the understand. We are not known. We are not introduced. So this is the situation. So when I am meeting these writers, the so-called, the very famous, very regarded writers, nobody was prepared to write or take the points for me because I have gathered a lot of statistics and information about the coastal community. We also have heroes. We also have heroines. We also have heroic deeds. And we are also warriors. We are also the great sailors. We had a great economy. We had a great, great life to be recorded. And when I just ignored, thought, maybe this is the point where I have to decide that let me get into the literature. Whether right or wrong, come on, Joe DeCruz, you become a writer, and write this literature. And see, prior to this, sorry, my time is still little bit. Yeah. And when I prior to this, when I was studying, I was a research scholar. Growing in this village, in the coastal village, my opinion, my understanding of the life, the economy, the life there was different. But going back as a research scholar and seeing the coast, that was totally different. Because it was shocked to see videos, to see a lot of debts, to see these people as unscrupulous spenders, and they enjoy their face is towards the sea, and the back, and towards the land, and the back is towards the land. So they come to the shore, come to the land, and for entertainment. That's all. So this was shocking to me. Now, let me cut short, because let me cut short. I carry a message that the coastal communities want to communicate with the upland people. The coastal soul want to communicate with the soul of the upland. And we want our literatures to be recognized. We want our literatures to be understood. And what will be the result of this? The dialogues are possible. Discussions are possible. If the discussions are possible, because the uplanders are the politicians, uplanders are the lawmakers, and if the uplanders are able to understand the life and the struggle of the coastal region, laws will not be prepared and projects will not be prepared which will affect the coastal life there, my dear gentlemen. That is the reason, that is the message I am carrying. And I really wanted to tell, because whenever I am talking about freedom, there is a poem coming to my mind of Rabindranath Tagore, where the mind is without fear. Of course, the mind is not without fear. The head high, there is no head high in the coast. And the knowledge is free, there is no knowledge free there. I just read this, when the words come out from the depth of truth. Today we are having a problem with the internationally, nationally known problem. That problem is the Kachitibu problem, the fisherman problem that Sri Lanka is climbing and Indian fishermen are climbing. This problem is solved not because just like it's not a political issue. It is because they don't understand the truth. If you want a solution, please go near to the truth. And nobody, even the politicians, the people of the region, they don't want to go near the truth and find out the solution. So, where the words come out from the depth of the truth is not there, and Rabindranath Tagore says, into that heaven of freedom, oh my father, let my country away. Where is the freedom? And I am not able to understand where is freedom. When I am not able to understand where is freedom, where is heaven? And this is the message I want to tell you. And the coastal communities, because literature, if it becomes the voice of the voiceless, and literature should accommodate the coastal communities. And the coastal communities, the moment the coastal communities get their voice recorded, resonated in the Legislative Assembly, resonated in the Parliament of India, then only freedom, the balance of freedom
freedom will chime in the coastal region also. Thank you very much for the chance. Thank you. अभी आपने बहुत ही इमोशनल और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले, समुद्र के आसपास रहने वाले समाज की पीड़ा क्या है, उनकी ग्रीवांस क्या है और उनके लिए आजादी आधी अधूरी क्यों है, इस विषय पर बहुत विस्तार से सुना। आजादी का अर्थ पूरे देश के लिए एक जैसा होना चाहिए और नहीं है, ऐसा जो विक्रम जी का कहना है, ये आपने सुना। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि आजादी का अर्थ हम सब के लिए अलग अलग है और बहुत ही अच्छे ढंग से, कन्विंसिंग तरीके से उन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। आप इस पर विचार करें। इसके पश्चात मैं आज के अपने तीसरे प्रमुख वक्ता जो है उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ। संगम नसैया भटला जी, संगना भटला जी, आप हमारे बीच में हैं और बहुत बड़े विद्वान हैं, संस्कृत तेलुगु के, संघशास्त्र, व्याकरण, कोश निर्माण, इतिहास, इन सभी विषयों पर बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं। आज इन सब विषयों से हटकर वो बात करने जा रहे हैं कि आजादी का उनके लिए क्या है। स्वागत है सर। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रान्विता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। I am very glad to be associated with this function, Mahotsav Unmesh। और सरस्वती जी की प्रार्थना के बाद, उनको नमस्कार करने के बाद, ये मंच पर बैठे अध्यक्ष महोदय चमन गुप्त जी को और साथियों को नमस्कार करता हूँ। सत्य के सभांगण में जो बैठे हैं विद्वान लोग, उनका भी नमस्कार करते हुए, विद्यार्थी लोग भी हैं, उनको आशीर्वाद भी देना चाहता हूँ। और let me start the paper with the famous headache. Freedom of my hands ends where your nose starts. आपकी नाक जहां है तब तक मेरे हाथ की आजादी रहती है। मेरे हाथ, वो नाक जो है थोड़ा आगे रहती है, भगवान ने उसे ट्रैक करके रखा है, ये बॉडी लाइन से थोड़ा आगे रहती है, वहां तक की हमारी स्वतंत्रता होती है। मुझे यहाँ स्वतंत्रता नहीं है, अध्यक्ष जी मानते हैं, इसलिए कि मैं चाहूं 1 घंटे के लिए यहाँ उपन्यास करूं या भाषण करूं तो उन्होंने इनकार करते हैं, 10 मिनट में खत्म करा बोलते हैं। इसलिए मुझे स्वतंत्रता नहीं है, भाषण देने की स्वतंत्रता नहीं है। Yes, it is not. It is only freedom of an individual is valid as long as it does not intervene with others. Your freedom should not war with freedom of others. If someone says recklessly that it is my freedom, who are you to interfere?
means it is not only callous but crossing the limits of freedom of others also. Freedom means not being constrained, not being obstructed, not interfered by others. Your unbridled creativity, exercise of political rights, enjoying the freedom of guaranteed by the Constitution, way of living, which is not a bondage, not controlled by others. Freedom is itself in human nature. Certainly, freedom is part of the nature of human being, but unrestrained liberty mars the social life. It may be true that there was no need of exercising freedom when humans were dwelling in forests and caves. But once the man entered in the social life, freedom became necessary. Some restraints and rules are necessary to live together. Both became unavoidable and perfect at the same time. By nature, man possesses inherently both human and devil qualities. If the bad traits are not kept under leash, criminality, retribution, punishment, and loss would become unavoidable. If this control is absent, freedom will be in peril and must face importunate lack of freedom leads to misery. Thus, the freedom and social loss are both the sides of a coin. Unbridled freedom and liberty may lead to anarchy and imposition of emergency. Emergency means emergency in a country leads to all sorts of freedom getting abolished. It is true that freedom of expression is endowed by our Constitution. However, freedom of expression in the form of unguarded comments that trample upon the freedom of others and degrading of others, religions, customs, etc., inevitably leads to conflicts and may cause rights. Freedom of religion, it is nowadays a topic. People are free to practice their respective religions. Individually, one can convert to any other religion. Nevertheless, some nations have declared their states as religious states. This is the situation particularly in the nations that are Islamic. Islamic countries, though, permit the people practicing other religions to live in there and allow them to contribute to the development of their society or their nation, don't allow people to preach about their religion and proselytization. India is not such a country which practices equality of all religions, and it is made constitutional, termed as secularism. Freedom for blasphemy of one's religion, criticizing the religious scriptures of the same will prove disastrous. The principles of rules of one ancient scripture may not be relevant to the present day situation, present day society. In any religion, this is common to all. So the freedom of restricting within a religion should be confined to their own people. The interference of other religions in this exercise would lead to conflict. The followers of Islam don't accept any criticism of their faith. Ayatollah Khomeini ordered the elimination of Salman Rushdie. Taslima Nasrin had to run away from Bangladesh, her own country. But these very writers who are dreaded of the unbearable situations in their countries have utilized the freedom in our country completely. The European nations awarded capital punishments for criticizing the religion in ancient and medieval ages also. Hindu religion practices freedom of reforms
and reconstructive. The religion has turned into dharma and undergone reforms. It allowed questioning of faiths in Hindu religion, but Upanishads are nothing else but series of questions. Our constitution has also undergone umpteen reforms. There is not a rock. It can be molded, it can be reformed. The citizen of religions should be united. The people should not have different civil codes based on their religions. It misuses the freedom. Uniform civil code is implied. Our founding fathers expressed noble opinions in the names of religious freedom. Our constitution did not contain the word secularism originally. It was incorporated subsequently in the latter days. That means a reform to our constitution. Leading a life with freedom of religion by respecting other religions is, in fact, true secularism. Tolerance towards other religions is the sinew of secularism. Unfortunately, the followers of non-Hindu religions are proselytizing Hindus, luring and forcing them to conversions. They are misusing the freedom of religion under the guise of secularism. The Constitution says there should be no discrimination based on religions. It is the result of appeasement of vote bank politics, which we continue to attack, and even today. Freedom means living physically, mentally, and socially free according to one's will. It is not said to be called as freedom if it is under subjugation, slavery, or under the rules of aliens. Freedom is all about utilizing the natural financial resource that being to our own country, and being able to choose the people that govern the nation. In a story of Zakir Hussain, the name was Abu Khamki Bakri. The goat escapes from confinement and runs into the forest, though it knows well that she will be killed by wolves, by lepers. This is a longing for freedom. The moral of the story is better die than living under captivity. Living equally with others, that too freely, enjoying freedom of religion, right to live, the right to inherit culture and traditions also comes under the category of freedom. If there is political freedom, the freedom with fundamental rights flows automatically out of it. Democracy needs freedom of the press to question the authorities, uplifting the spirit of the people, and to provide news and views that concern the people. If freedom of expression is curtailed, the criticism of government is not tolerated. Freedom can never flourish. Freedom of the press is only the guaranteed force against the anti-people laws that are made in legislature. Even in the absence of opposition, the power exercised in the legislature can thwart the freedom of nation that can be exposed and voiced out by the press. This freedom or liberty is essential in democratic setup. The independent India has witnessed thwarting the press on many occasions. It is the press that unveils the correct political source. Passing on fake information through digital media nowadays is very popular, known popularly. Restoring to unused criticism has become order of the day. Social media has both advantages and disadvantages in the present day. This freedom should be restricted. Freedom is a pleasant experience in the human's life.
democratic country can always enjoy the freedom abiding the laws of the country. The rules that govern and bind the freedom for a healthy society is a possibility only in democracy. Nations formed based on religion, communism, or other thoughts cannot offer the freedom to their citizens freely, like democracy does. Let us enjoy the freedom in our beloved mother country, that is Bharat. Thanks to you. बहुत ही संक्षेप में और बड़े स्पष्ट शब्दों में आजादी क्या है, उसके कितने एस्पेक्ट्स हैं, उन पर सैया जी को सुना। अब ये हमारे लिए आनंद का विषय है कि सभी भाषाओं में बोलने वाले वक्ता हमारे बीच में हैं। अब मैं आज के चौथे वक्ता श्री शरण कुमार लिवाले जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि दलित साहित्य का नाम जब आता है तो इनके उपन्यास उत्तरमासी का नाम आए बिना रह ही नहीं सकता। और पूरे भारत में नहीं, भारत से बाहर भी दलित साहित्य को एक नई पहचान देने वाले हमारे बीच में हैं। मैं अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। धन्यवाद। इस सेशन के अध्यक्ष सुमनलाल गुप्ता जी और सभी रिप्यूटेड पैनलिस्ट, हमारे बीच में in front of me, my mentor and editor, Vinny Krishna, who is edited my autobiography, The Outcast, in English translation, which is published by Oxford University Press. अभी से कैसे यहाँ है, आप सब भाई बहन, मुझे कोई पूछ रहा है कि मुझे पूछ रहा है कोई कि आजादी का मतलब क्या है, तो मैं क्या जवाब दूं? आजादी का मतलब क्या है? मेरा प्राण है, मेरी आंख है, मेरा दिल है, मेरा दिमाग है, मेरा व्यक्तित्व है, मैं हूं। आजादी के बिना मैं कुछ भी नहीं। आजादी की इतनी आदत हो गई है कि मेरी आजादी कोई भी छीन नहीं सकता। यही अवस्था हमारे आम हिंदुस्तानियों की है, क्योंकि आजादी का जो आंदोलन है, इस आंदोलन में हमें सिखाया है कि आजादी क्या है और आजाद तरीके से कैसे जीना है, और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं एक लेखक के नाते जब आजादी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है आजादी कुछ नहीं, एक सृजन है, क्रिएटिविटी है। आजादी के बिना कुछ भी क्रिएटिविटी नहीं होती है। जो मन आजाद है वो ही कुछ क्रिएटिविटी कर सकता है। गुलाम मन जो है वो कुछ क्रिएटिविटी कर नहीं सकता है। इसका अर्थ यह है आजादी कला की जन्मभूमि है, कला की जन्मभूमि है। और कला का हर आविष्कार, लेखन हो, चित्रकला हो, संगीत हो, डांस हो, नृत्य, कुछ सब जो आविष्कार है वो कला नहीं है, कला का आविष्कार आजादी है। और इस आजादी को मैं एक ऊर्जा के रूप में देखता हूँ, एक प्रेरणा के रूप में देखता हूँ। आजादी व्यक्ति की जीने की प्रेरणा है, समाज की जीने की प्रेरणा है और राष्ट्र की जीने की प्रेरणा है। इस प्रेरणा से हम जीते हैं, हमारी सांस आजादी है। जैसे कि बरसात आकाश से आती है, सूरज के किरणें आकाश से आते हैं,
चंद्र के में आकाश रहते हैं, वैसे आजादी आकाश से नहीं आती है। अगर आजादी जमीन से होती है, लोगों से जन्म लेती है, लोगों के हक अधिकारों से आजादी का जन्म होता है, ये मैं मानता हूँ। हक अधिकार के सिवा आजादी जीवित रह नहीं सकती। लोगों के हक और अधिकार जब तक जीवित है तब तक आजादी जीवित रह सकती है। आजादी एक की नहीं होती। मुझे हमेशा लगता है कि मैं आजाद हूँ जब तक मेरी आजादी आप लोग रिकॉग्नाइज नहीं करते, तब तक मैं आजाद हूँ। आपकी आजादी मेरी आजादी है, मेरी आजादी आपकी आजादी है। अपनी हर एक की आजादी इतनी जुड़ी है हमारी संस्कृति से, हमारी परंपरा से, हमारे समाज से, हमारे राष्ट्र से। वो अलग नहीं कर सकते हमारे आजादी को। मैं जब आपके आजादी का आदर करूंगा, आप मेरे जब आजादी का आदर करेंगे, तब जनतंत्र का निर्माण होता है। जनतंत्र आजादी का सर्वोत्तम रूप है, सर्वोत्तम सौंदर्य है। जनतंत्र के बिना स्वतंत्र का सौंदर्य नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा, आजादी है, समता नहीं है, उस आजादी को कोई अर्थ ही नहीं है। समता होना चाहिए, तब आजादी सुंदर होती है, महत्व की होती है। समता है और आजादी नहीं है, उस समता को क्या जलाना है? समता के साथ साथ आजादी भी होना जरूरी है। समता है, आजादी है, मगर भाईचारा नहीं है, बंधुता नहीं है। उस आजादी को, उस समता को कोई भी अर्थ नहीं है। आजादी से, समता से भाईचारा सर्वोपरि है। भाईचारा में समता भी आती है, समता भी आता है, समता है और स्वातंत्र भी आता है। भाईचारा सर्वोपरि है। भाईचारा में ये आजादी ऐसा मुझे इंक्लूड है, ऐसा मुझे लगता है। आजादी, जब आजादी के बारे में मैं सोचता हूँ कि आजादी सबको मिलनी चाहिए, कुछ वर्गों के लिए नहीं। जो रोंदे पीसे लोग हैं उनको भी आजादी मिलनी चाहिए। जो दलित है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है, कश्मीर के पंडित भी है, केवल मुस्लिम है, मुस्लिम भी है, सिख है, जैन है, ये सब जो माइनॉरिटीज है, इनको आजादी मिलनी चाहिए। ये आजादी के लिए तड़प रहे हैं। मैं जब दलित विमर्श को देखता हूँ, जब मैं आदिवासी विमर्श को देखता हूँ, जब मैं स्त्री विमर्श को देखता हूँ, ये तीनों विमर्श आजादी के लिए, आजादी के आकांक्षा से निर्माण हुए हैं। ये तीनों विमर्श हमारे राष्ट्र की आजादी को महान बनाना चाहते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो आजादी से वंचित है, उस वर्गों की आजादी के लिए लड़ना लिखना एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। जब तक हमारे 75 साल में हमारे देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बहुत मजबूत हुई है, आज तो सर्वोपरि है, हर बात में हम आक्रामक हो रहे हैं और बात कर रहे हैं। सोशल डेमोक्रेसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी की बहुत जरूरत है। सोशल डेमोक्रेसी से ही आजादी मजबूत बनती है, राष्ट्र मजबूत बनता है, ऐसा मैं मानता हूँ। मैं 75 साल में बहुत बदला है, समाज बदला है, देश बदला है, हम बदले हैं। मैं जब बचपन में स्कूल में जाता था, तब मुझे स्कूल के बाहर बैठकर शिक्षा लेनी पड़ती थी। जूते जहाँ छोड़े जाते हैं वहां मैं पढ़ता था और पढ़ाई करता था। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये बदलाव है। आज इसका अर्थ यही है कि आजादी जनतंत्र के कारण हम यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम पहुंचे हैं नहीं, हमारे समाज को, राष्ट्र को भी हम यहाँ तक खींच के लाए हैं। और इसको ही मुझे लगता है कि ये आजादी की भावना है। मंगल पांडे से महात्मा गांधी तक एक आंदोलन चला। वो आंदोलन था ब्रिटिशों को यहाँ से हटाने का आंदोलन था, ब्रिटिशों हम देश को मुक्त करने का आंदोलन था। मंगल पांडे से महात्मा गांधी तक वो आंदोलन सक्सेस हुआ, हमें आजादी मिली, उसके 75 साल हुए हैं। राजा राम मोहन राय से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तक एक आंदोलन चला। वो सामाजिक
समता के लिए आंदोलन था, इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन था, हमारे लोगों के खिलाफ भी आंदोलन था। अभी भी वो आंदोलन चल रहा है और उस आंदोलन के प्रतीक दलित विमर्श, आदिवासी विमर्श और स्त्री विमर्श है। हम महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे भारत माता के चेहरे पर जाति के काले धब्बे हैं। ये जाति के काले धब्बे होने के कारण हमारी भारत माता अच्छी नहीं दिखती है, सुंदर नहीं दिखती है। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत माता का चेहरे पर जो धब्बे है वो हमारे खून से हम धो देंगे और भारत माता का चेहरा सुंदर करेंगे। हम दलित विमर्श वाले, आदिवासी विमर्श वाले और स्त्री विमर्श वाले लेकर हम ये मानते हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था इस देश को सुंदर बनाने का, भारत माता का चेहरा सुंदर बनाने का, वो प्रयास हम कर रहे हैं। हमारा राष्ट्र सुंदर होना चाहिए, हमारा राष्ट्र महान होना चाहिए। इस सपनाओं को लेकर, इस प्रेरणा को लेकर हम बोलते हैं, लिखते हैं, चिंतन करते हैं। मुझे लगता है कि हमारा ये कार्य हमारी आजादी को, हमारी स्वतंत्रता को मजबूत करने वाला कार्य है। और इतनी बात कहकर मैं धन्यवाद देता हूँ। दलित साहित्य चिंतन के परिप्रेक्ष्य में आजादी का अर्थ क्या हो सकता है, इस विषय पर आपने लिम्बाले जी को सुना और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने ये बात स्पष्ट की कि आजादी सीमित नहीं हो सकती, लेकिन उसकी सीमाएं सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए और परिणाम की भी बराबरी होनी चाहिए। केवल अवसर की बराबरी काफी नहीं है। अवसर आपने दे दिया कि सबको समान अधिकार है, लेकिन उसका जो परिणाम है अगर समानता में नहीं निकल रहा तो वो उचित नहीं है। तो उन्होंने समता की बात की, स्वतंत्रता की बात की, भ्रातृत्व की बात की। ये तीनों चीजें एक साथ होंगी तो शायद सही मानव में आजादी हो सकती है, ऐसा उनका कहना है। मैं अब अपने इस सत्र के अंतिम वक्ता को, जो कि कोंकणी लेखक हैं और बहुत मुझे दुख हो रहा है कि मैं उनके विषय में ज्यादा बोल नहीं पा रहा, क्योंकि मुझे ना तो साहित्य अकादमी ने कोई ब्रीफ दिया और ना उनसे मिलने का अवसर मिला। वो सीधे मेरे सामने मेरे साथ है, लेकिन मैं बिना भूमिका के इस महान लेखक को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपना Chairman, I must thank you for saving my time also and saving me the embarrassment of listening to my own introduction. So, Mr. Chairman, my fellow panelists, the audience, friends in the audience, at the outset, let me apologize for this sore throat. And I won't blame this sore throat on the climate in Shimla. I came to Shimla with this sore throat. So, because it has been a habit of the organizers of blaming everything on Shimla and wherever we face some difficulties here. Anyway, I also congratulate Sahitya Academy for not for inviting me or you here. But important is in these difficult days, it is difficult to choose the right topics for the consumption of the young minds. And they have chosen freedom, which is very, very topical these days, and particularly in the present situation where, I suffocate. I don't feel the air, freedom, free air in the air, freedom in the air. So at this time, Sahitya Academy has chosen this topic, given this topic to us. However, we are 10 minutes, we have been given 10 minutes each, and I will try to stick to it. We are here not to discuss what freedom means. We are here to discuss what freedom means to me. The very hypothetical, very hypothesis of this topic
is that freedom can mean differently to different people. On a lighter note, lighter vein, I would recall, but initially when the bag was given to somebody, they asked, of course it was a humorous comment, is there money in it? But let me also tell you, besides us, there are some people for whom freedom is money, because they think anything can be bought with money, and freedom is money. Well, let me express, not for everybody here, otherwise you wouldn't have been invited here. Now let me express my views on this topic, and I will try to be as brief as possible. And I will go with some presumptions with this audience knowing what freedom is and what is expected of this topic. During the colonial days, the freedom, that is Swatantriya or Swatantrita we call it, meant freedom from the alien rule. That is why we call it independence. So independence, though complementary, is not synonymous with freedom. Freedom is a right that every individual seeks, mostly from the indigenous dispensations. In the present context, where we have democracy, the freedom has a larger meaning, which is azadi. And I am very happy that Sharat Kumarji dwelt upon the 4 fundamental rights that our Constitution has given us. And my request to all the young people who are here to go back with this thought that we have to protect, at any cost, we have to protect the 4 fundamental rights given to us by the Constitution: equality, liberty, justice, and fraternity. जिसका जिक्र शरण कुमार जी ने बहुत अच्छी तरह किया. So, in the present context, we also call it azadi or mukti. In India, the term mukti has 2 connotations. One is freedom, which we all know about. Mukti from all sorts of restrictions of worldly shackles. The other term is salvation, which probably my friend who spoke much earlier would know, and I agree with it probably. Because salvation is protection from other worldly dangers, which will help attain the eternal peace, moksha. Frankly, I am not interested in the other worldly well-being. So I aspire for peace, for love, for compassion, and what Sharan Kumarji said, samatha. If you regard love, I aspire for this peace and love, 2 important virtues to exist on my dear motherland, on my mother earth. I won't be restricting freedom to my land, my motherland only. I seek freedom that is associated with peaceful coexistence. Peaceful coexistence is possible when people live in harmony. My friends, I'm very proud to tell you, I hail from Goa, which is known for its exemplary harmony, which existed until recently, and I hope it will continue to exist in spite of the problems we are facing in Goa. Goa is a tiny state, but you should know, we regard every religion as our own. We don't say, I never felt the other factor in Goa. That is more important. I am born as a Hindu, but I live as a Catholic. I live as one among many, but without othering the others. This is very, very dangerous concept. I love my country, but I don't hate other countries. That is very, very important. I love my own home, but I love my neighbors as well. And love thy neighbor is a very, very important thought which we can discuss. Well, but if I believe in coexistence, peaceful coexistence, what stops us from living in coexistence? Let us dwell upon 2 major factors
that obstruct us. We all have read and we all know about it, though we don't talk very loudly or openly. More people have died in the name of religion than any other cause on this earth. Are you aware of it? Forget the history. Even today's so-called civilized society, we continue to live under constant threat. Every faithful is apprehensive that his or her God is threatened. They have the notion that our God is threatened to be desecrated by the other cells. And see the paradox. Instead of God's coming to our rescue, we are trying to go to the rescue of our gods. That is because we have lost faith in our God. And hence, the riot continues, resulting in thousands of deaths. It is true that nobody likes widespread deaths, killings. No one likes genocide. Yet, we don't learn our lessons. We don't need a foreteller to make us understand that as long as the othering factor in the name of religion continues, the tragedy will go on. This othering factor is the one that stops us from enjoying our right to freedom. The assaults and intimidations happening in many countries, and we are very proud to point out to other countries. We forget what happens at home. But in many countries, it happens as it happens in many countries, including our neighboring countries, not sparing our own, not sparing my own country, are a matter of worry. The international human rights regulatory bodies are constantly on their toes to warn the perpetrators with no results. This warlike situation is existing in many countries of this world. Then, war or no war, the gun violence is rampant in not only in certain countries, but we look upon certain countries who are leaders of the world. But the gun violence is rampant in what we call them as developed countries, where more innocents are killed than the criminals. In the United States, school shootouts often hit the headlines. As recently as 3 weeks back, 19 school children and 2 adults were killed in a South Texas school. You are aware of it. Yet, guns are freely available in that country. As per the data available, it says 40,000 people succumb to this gun menace every year. Gun culture in the United States claims 23,000 lives annually only who commit suicide with guns. The ownership and gun regulations are frequently questioned and hotly debated. People of that country have been exercising their right to freedom to protest against the gun policy, but no ban on guns is in sight. Right? The answer is obvious. Everybody knows, nobody wants to talk. This freedom, what I'm insisting that this freedom is necessary. Be it religious riots or a rise in gun culture, a handful of powerful men are trying to throw the world off its hinges. They succeed because we do not exercise our democratic rights to object. And with democracy, we have umpteen number of rights. We don't have to get secularism into the constitution. We don't need it in constitution. Democracy itself comes to the concept of secularism. If we people, especially we, when I say we as writers, are united in thoughts, in words, and in deeds, we can offset the perpetrators, their plans. In India, we attained our independence 75 years ago. That is why precisely why we are here, as we are celebrating Azadi Day 75 years.
Remember, our freedom fighters have paid price for the freedom we earned. Today, in independent India, we don't want freedom at any price or at any cost. I love freedom, but I'm not prepared to pay any price. I don't want to pay any price. We want freedom free. That is because I know no creativity can prosper. Again, I'm referring to Chani Kumar Limbare, who rightly said, creativity can prosper only when there is freedom. Not only prosper, it cannot survive without freedom, in the absence of freedom. To me, freedom means freedom from violence, freedom from hate speeches, freedom from discriminations, freedom from poverty, freedom from ill governance, and freedom from blind opposition. I want a right to freedom to think, freedom to act, freedom to speak in the interest of humanity, freedom to love my fellow beings as equals. In the end, I would like to say, freedom to me, freedom is words without boundaries. Thank you. धन्यवाद दामोदर राव साहब, आपने बहुत विस्तार से और बहुत सरल ढंग से आजादी की अपनी परिकल्पना को हमारे सामने रखा। अब मेरे सामने सबसे कठिन काम है, इतने बड़े बड़े विद्वानों के विचार हमने सुने और अध्यक्ष के नाते यदि मैं उन सब विचारों को इकट्ठा करके उनका सार आपके सामने प्रस्तुत करने लगूं, ये वैसी ही मूर्खता होगी जैसे कोई हरी घास पर प्रातः ओस की किरणें बिखरी हों और कोई कहे कि बहुत सुंदर है, मैं इन सबको अंजलि में भरकर इन्हें पेश कर दूं। संभव नहीं है। इसलिए आपने इनके विचार, इनकी जुबानी सुने हैं और मैं समझता हूं कि आजादी को लेकर जो विचार विमर्श यहाँ हुआ वो इतना मल्टी डायमेंशनल है, उसमें राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत आजादी सब कुछ आ जाता है। लेकिन मैं अपने लिए क्या कहूं, मेरे लिए आजादी का अर्थ क्या है, व्हाट इंडिपेंडेंस मीन्स टू मी। मैं अपने विषय को बहुत सीमित रखूंगा। हमें आजादी चाहिए क्यों? मेरे सामने प्रश्न है। हम सब सूरजमुखी के फूलों की तरह हैं। हमारा मुंह हमेशा सुख के सूर्य की ओर रहता है। जिधर जिधर सुख का सूर्य होता है उधर उधर हम घूमते जाते हैं, यानी कि हम सुख की खोज करते हैं। हम सब सुखजीवी हैं, सुखी रहना चाहते हैं और सुखी रहने के लिए जो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आजादी है चाहे कुछ और है, उसको हम गले लगाते हैं। तो सुख क्या है, मनुष्य का सुख किसमें है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो इससे पहले प्रश्न उठता है कि मनुष्य क्या है। मैं मनुष्य को किस रूप में देखूं? पश्चिम ने कहा मैन इज एन इकोनॉमिक बीइंग, किसी ने कहा मैन इज ए पॉलिटिकल बीइंग, किसी ने कहा मैन इज ए सोशल बीइंग। यानी कि मनुष्य के 10 टुकड़े करके उसको 10 तरह से समझने की कोशिश की, परंतु मनुष्य तो मनुष्य है। उसको अर्थशास्त्र से, राजनीति शास्त्र से, समाजशास्त्र से अलग अलग काट कर कैसे समझा जा सकता है? संभव नहीं है। तो मनुष्य क्या है? मुझे लगता है, मैं खड़ा हूं आपके सामने, आप कहेंगे मैं कहता हूं मैं मनुष्य हूं। क्यों हूं? क्योंकि मेरा आकार ऐसा है, जिसके पास इस तरह का आकार होगा उसको हम मनुष्य कहते हैं, यानी कि शरीर। सबसे विजिबल चीज जो है मेरा शरीर है, तो मनुष्य शरीर है। और इसके सुख छोटे नहीं है। मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाना चाहता हूं, तो उस भूख को मिटाने के लिए
मैं कुछ करता हूं। तो इसलिए आजादी का पहला अर्थ क्या हुआ, मेरी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हों, अगर वो हो रही हैं, उससे मैं सुखी हो रहा हूं, तो मैं आजाद हूं। मेरी आजादी का पहला अर्थ ये है। लेकिन क्या इतना ही है? ये तो पशु का भी है। पशु को खाना दीजिए और हमसे खाएगा, सोएगा, घूमे फिरेगा, तो पशु भी सुखी है, हम भी सुखी हैं। तो क्या दोनों में कोई अंतर नहीं है? अंतर तो है, क्योंकि बढ़िया खाना सामने रखा है, भूख लगी है, लेकिन एकाएक समाचार आ गया कि फलां परिवार में कोई ट्रेजेडी हो गई, डेथ हो गई, तो मैं कहता हूं मैं से नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा मन एकदम उचाट हो गया है, दुखी हो गया है, परेशान हो गया है। मेरे शरीर का सुख मैंने छोड़ दिया अपने मन के सुख के लिए। मेरे मन का सुख मेरे शरीर के सुख से बड़ा हो गया। अब मन भी चाह रहा है खा लो, शरीर भी चाह रहा है खा लो। सामने वो चीज रखी है जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? रसगुल्ला सामने है, मन भी ललचा रहा है, शरीर भूख भी लगी है, पर मैं खा नहीं रहा। इसने पूछा क्यों नहीं खा रहे? अरे भाई मैं खा नहीं सकता, डायबिटीज है और बड़ी भयंकर है। मेरी बुद्धि जो है, मेरा इंटेलेक्ट जो है, वो मुझे समझा रहा है मत खाइए। ये 10 मिनट का सुख जो है वो तुम्हें 6 महीने के लिए अस्पताल पहुंचा देगा, ये सदा के लिए नकारा कर देगा, मैं छोड़ दूंगा। तो मेरे लिए बुद्धि का सुख मन और शरीर के सुख से बड़ा हो गया, इसलिए मैं उससे बड़े सुख के लिए इन दोनों सुखों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाऊंगा। तो फिर ये तीनों चीजें एक लाइन में हैं। मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये तीनों उस चीज को खाने को तैयार है। पर अचानक मुझे कोई बताता है कि ये किसी गरीब की हत्या करके, उसकी लूट करके ये तुम्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। मैं कहता मैं नहीं खाऊंगा। क्यों नहीं खाओगे? क्योंकि मेरी आत्मा नहीं मान रही, मेरी आत्मा गवाही नहीं देती कि मैं इस तरह का अन्न खाऊं। मैं भूखा रह लूंगा, उपवास कर लूंगा, मन को मार लूंगा, अपने आप को समझा लूंगा कि मैं भूखा रहना ठीक है, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। ये चारों तत्व मुझे डिफाइन करते हैं। मैं मनुष्य हूं, मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं आत्मा हूं। और जो ये चारों जब एक अलाइनमेंट में होंगी, जब मेरे आत्मा, मेरी बुद्धि, मेरा मन, मेरा शरीर किसी विषय पर एक साइड लाइन में चल रहा है, तो मैं क्या हूं? इंटेग्रेटेड बीइंग हूं, एक आत्मा मानव हूं, मैं एक हूं, और मैं तब सुखी हो जाऊंगा। मेरे सुख या मनुष्य मात्र के सुख की कल्पना इससे अलग नहीं हो सकती। जब तक मनुष्य पूर्णता में किसी चीज के साथ नहीं जुड़ता, वो सुखी नहीं हो सकता। और जब सुखी नहीं होता तो वो कहता है मैं स्वतंत्र नहीं हूं। स्वतंत्रता खत्म हो गई तब हमें लगता है, जब हमें लगता है हमारे मन की बात नहीं हो रही। मैं कुछ करना चाहता हूं, क्यों करना चाहता हूं? उससे मुझे सुख मिलता है। मैं हर वो काम करना चाहता हूं जिससे मुझे सुख मिलता है, और हर वो काम जिसमें रुकावट आती है वो मुझे दुखी करता है। तो आजादी का मतलब सुख प्राप्ति भी है, और सुख जो है केवल शरीर का नहीं। भगत सिंह के लिए आजादी का मतलब भौतिक आवश्यकताएं नहीं था, शारीरिक आवश्यकताएं नहीं था। उसके लिए आजादी में आत्मिक सुख ये नहीं कि मेरा देश आजाद हो, मेरी आत्मा उससे पसंद हो। एक सैनिक जो है वो जान दे देता है, लेकिन अपने सीक्रेट्स नहीं बताता दुश्मन को। उसको कितने भी प्रलोभन दिए जाए वो नहीं मानेगा। तो इसलिए सुखी होने का अर्थ मेरे लिए आजादी का अर्थ है एक आत्मा होना, अपने आप में शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को अलाइन करना, एक साथ लेके चलना। दूसरा मेरे लिए अर्थ क्या है? मैं अपने लिए तो ठीक है, लेकिन मैं समाज में रहता हूं, परिवार में रहता हूं, इस समष्टि में रहता हूं, तो उनके साथ समरस होना, वो भी ऐसे ही बने, उनको भी इसी तरह की एकात्म भाव प्राप्त हो, उसके लिए मैं प्रयास करूं। मैं उनके साथ समरस होने की कोशिश करूं, और उस कोशिश में मुझे अगर शारीरिक सुख थोड़े छोड़ने पड़ते हैं, मैं छोड़ दूंगा,
मानसिक थोड़े से छोड़ने पड़ते छोड़ दो, लेकिन मैं समरस होने का प्रयास करूं इस व्यापक समाज के साथ, तो मेरी आजादी बनी रहेगी। अगर मैं उनके साथ समरसता नहीं, मैं केवल अपना अपना चाहता हूं, तो ये संभव नहीं है। और समाज के साथ तो हो गया, ये तो मानव समाज की बात हो गई, लेकिन मानव समाज से आगे सृष्टि है, नेचर है, प्रकृति है, जीव और निर्जीव है, उनके साथ भी तो समरसता पैदा करनी पड़ेगी। अगर मैं चाहता हूं मनुष्य तो सुखी हो जाए, मनुष्य तो एकात्म हो जाए, लेकिन वो सबको जो नेचर है, फाउल ऑफ द एयर एंड फिश ऑफ द अर्थ सी, उस सबके ऊपर मेरा अधिकार है, मैं सबको खा जाऊं। मनुष्य होने के नाते मैं राजा हूं यहाँ का, इस पृथ्वी का, और सब चीजों में मेरे लिए धोखे हैं। अगर मैं इस बात को लेकर चलता हूं, एंड आई हैव टू कॉन्कर द नेचर, प्रकृति को जीत लूंगा, उसको खा जाऊंगा मैं, और ये मेरा अधिकार है। अगर मैं इस प्रवृत्ति के साथ चलूंगा तो नेचर के साथ मेरा समानता नहीं होगी, परिणाम क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट आएगा, और जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो पर्यावरण का जो आज दिखाई पड़ रहा है विनाश, वो होगा, और वो विनाश फिर मनुष्य को भी नष्ट करेगा। तो इसलिए मुझे एकात्मता उस प्रकृति के साथ भी चाहिए, उस पूरी सृष्टि के साथ चाहिए। अब मैं खुद एकात्म हो गया, मैं अपने समाज के साथ एकात्म हो गया, मैं सृष्टि के साथ एकात्म होने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं इंडिपेंडेंट हो सकता हूं। अगर मैं ऐसा नहीं करता, मैं मेरी आजादी संभव नहीं है, सुपरफिशियल रहेगी वो, लेकिन इससे भी ऊपर कुछ है, वो है ईश्वर। कोई कह सकता है मैंने तो ईश्वर को देखा नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं मानिए, उसको कोई नाम मत दीजिए, पर कोई सत्ता तो है जो इस सारे कायनात को चला रही है। एक नियम से चल रहे हैं, वही कोई नियम भंग नहीं होता, कोई मनमाने ढंग से सूर्य नहीं उगता, मनमाने ढंग से कुछ नहीं होता। तो इसलिए ये कोशिश होनी चाहिए कि हम उस सत्ता को भी स्वीकार करें, और तभी शायद अपने हितों को या अपने स्वार्थों को सीमित कर पाएंगे और अन्यों के साथ बांट पाएंगे कि हम सबको उसने दिया है। रहीम के विषय में जो बहुत सुंदर पद है, दो पंक्तियां हैं कि रहीम दान दे रहे थे, नीचा किया हुआ था, तो पूछा कि भाई आप सिर झुका के दान क्यों दे रहे हैं? उन्होंने कहा देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रैन। लोग भरम मुझ पे करे, दाते नीचे नैन। लोगों को लगता मैं दे रहा हूं, इसलिए मैं शर्मिंदा हूं, जबकि मुझको बेकार में इज्जत दी जा रही है। इसलिए मेरे लिए आजादी का अर्थ है सारी सृष्टि के साथ और सृष्टि से आगे उस ईश्वर के साथ भी एकात्म होने का प्रयास करना। यहाँ पर अध्यात्म आ जाता है, तो मेरी आध्यात्मिक आजादी भी वहां जुड़ जाती है। इसको मैं संक्षिप्त में कहूं, मेरी आजादी का अर्थ क्या है कि मैं व्यष्टि रूप में, व्यक्ति रूप में, इंडिविजुअल रूप में एकात्म हो जाऊं, मैं समष्टि रूप में, समाज के रूप में एकात्म हो जाऊं, मैं सृष्टि रूप में एकात्म हो जाऊं, और मैं परमेष्ठी उस प्रभु के साथ भी एकात्म हो जाऊं, तो मैं आजाद हो सकता हूं। वरना संभव नहीं है, जैसे किसी एक को निगेट कर दोगे आपकी आजादी खतरे में रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मित्रों, मैंने अपनी बात समय पर समाप्त करने की कोशिश की, भटकने के चांसेस रहते हैं जब भाषण देते हैं, लेकिन एक बात तय है, हम पहाड़ के लोग हैं, पहाड़ किसी का उधार नहीं रखते, पहाड़ किसी का उधार नहीं रखते। आप कहेंगे कैसे? आप किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर जोर से किसी को धन्यवाद कहिए, गूंज जाएगी धन्यवाद। आप जोर से वहां खड़े होकर कहिए इसको गाली दीजिए, तुरंत गाली लौट के आएगी, तुरंत आएगी। तो इसलिए तो हम आभारी हैं आपके कि आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकृति ने मुझे सिखाया है, जब मैं पहाड़ों में घूमता था, बचपन मेरा यही भी था, शिमला में स्कूलिंग भी यही है, कॉलेज भी यही है, पढ़ाया भी यही है, देखता था कि इस प्रकृति के नीचे झाड़ी जहां उगी है वहीं देवदारू का है,
ये प्रकृति जो है सबको समान अधिकार देती है, अवसर देती है। जितना जिसमें क्षमता है उतना विकास कर लो, लेकिन जितना अपनी इच्छाएं प्रारंभ में बढ़ाते जाओगे तो झाड़ी बन के रह जाओगे। जितना विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से कह रहा हूं, जितना इस समय में अपने आप को संयोजित करके अपनी सारी शक्तियां लगाकर अपने सारे डाइवर्शन को छोड़कर आप अपने पढ़ाई में लगोगे और तो आप देवदार बन सकते हैं। अगर बिगड़ते जाओगे तो नीचे ही रह जाओगे, बिगड़ तो जाओगे, बड़े तो हो जाओगे, झाड़ी बड़ी हो जाती है, प्याज छोटा रह जाता है नीचे से, लेकिन वो जाता है 200 फुट तक, तो झाड़ी जाती है 6 फुट तक, 5 फुट तक। तो इसलिए आप प्याज बने, झाड़ी बनकर न रह जाए। प्रकृति ने आपको वो सब कुछ दिया है जो झाड़ी को भी दिया है, त्याग को भी दिया है। इसलिए आजादी का अर्थ सबको समान अवसर और समान रूप से आगे बढ़ने की पूरी आजादी मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबका अध्यक्ष महोदय, हम उस तरफ के पहाड़ हैं, आप जो धन्यवाद दिए हैं उसको प्रतिध्वनि के रूप में फिर धन्यवाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सत्र था। हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री चमनलाल गुप्त जी का और हमारे सभी प्रतिभागीगण का, दामोदर मागजू जी, मोहन गेहानी जी, R.H. ज्योति क्रूज जी, संगना भटला नरसैया जी और शरण कुमार रंगवाले जी, आप सबका हृदय से आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सत्र हमारा 12:30 बजे यहाँ पे प्रारंभ होगा, जिसका विषय रहेगा बहुभाषी कविता पाठ, multilingual poetry readings. See you around. Thank you.